Hello viewers, I hope you all are doing well. Today I am with another two little girls of Anwar Public School. So before I have a small interaction or sweet interaction with them, I would like to request the sweet girls to introduce themselves. Hello everyone, this is Zoha Shahid from class 8 standard in Anwar Public School. And you? Hello everyone, I Pallavi Rai, student of 8th standard from Anwar Public School. So your name is Zoha. Yes sir. Can I know the meaning of your name? Yes sir, Zoha means time, subah ka time. And can I know your meaning of the name? Yes sir, of course. Sir, the meaning of my name is Naye Naye Patte, new leaves of tree. New leaves of tree. Subha ka time and new leaves of the tree. So I am blessed to be connected with you all. Subha ka time and new leaves. Chalo, let us come to the main point now. Acha, I just want to know one thing from you, Zoha. Yes sir. What is unity? Sir, What is unity? Define it. Sir, the word unity is a 5-letter word and has a huge meaning that we all should know. Unity is a need of the hour. In every country, people need unity to survive. If people will not unite, they will be weak, alone, and then they will be facing a lots of problems. In all means, we should always help and support other people who need help. We should always stand. Yeah, you mean to say unity helps in supporting one another. अच्छा पल्लवी, आप क्या कहना चाहेंगे यूनिटी के बारे में? Sir, I want to say that सभी के अंदर एकता की संभावना होनी चाहिए. The meaning of unity is एकता. सभी के अंदर एकता की संभावना होनी चाहिए, सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सभी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. Everyone want to live with each other. सभी को एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. अच्छा, व्हाट इफ अगर सब यूनिटी नहीं है तो क्या होगा? सर, वहाँ पे निगेटिविटी होगी. दस पीपल लिव इन लाइक निगेटिविटी एटमॉस्फेयर एंड दे नेवर हेल्प ईच अदर. वो उनके अंदर अच्छा यानी कि स्वभाव यूनिटी ना- जहाँ नहीं होगी वहाँ लड़ाई होगी, Yes, बुराई sir. होगी, नेगेटिविटी रहेगी. Yes, sir. वेरी गुड Lot of पॉइंट. things. अच्छा जोहा, कैन यू ऐड सम मोर पॉइंट्स टू यूनिटी? Sir, we all are familiar with the saying, the sticks in a bundle are unbreakable. It indeed becomes difficult to break a bundle of sticks altogether. The challenging task is to remain as a group, huddled together when something or someone tries to break you. Unity is the way of living. It is the way people are connected, not always through blood relations, but through kindred spirits. Unity is the oneness among people of different classes, creeds, and religions. We live in a country with the most diversity among all the nations in the world. But diversity or individuality is not a barrier that should come between friendship. We don't need to have the same surname to feel united. या पल्लवी, कैन यू ऐड वन और टू पॉइंट्स? Sir, yeah, of course, sir. Sir, we don't need to discriminate between girls and boys. This is also a type of unity. एकता को कचरा बनाने का ये एक और तरीका है इनडिस्क्रिमिनेशन करना. अच्छा, इनडिस्क्रिमिनेशन यू वांट टू नहीं करना चाहिए. Yes, sir, नहीं अच्छा, करना. बॉयज़ एंड गर्ल्स को मज़हब से नहीं होना चाहिए, Yes, हिंदू sir. मुस्लिम से नहीं होना चाहिए. हिंदू मुस्लिम आपस में है, Religions, भाई caste, भाई ऐसा whatever. मिलजुल कर सबको अपना अपना काम करना चाहिए और स्ट्रेंथ बनाना चाहिए. When people live with each other, then that's called unity. अच्छा, एकता. वेरी गुड. सो वीवर्स, आई थिंक यू ऑल हैव हेard अबाउट द यूनिटी. ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे क्लास 8 के जो है यूनिटी को डिफ़ाइन किए अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में, अपने विचार में. तो मैं समझता हूँ ये आपके माइंड, बॉडी, सोल तक पहुँचा होगा यूनिटी के बारे में. और मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह यूनिटी बनाए रखें ताकि जो है अब हमारे सराउंडिंग निगेटिविटी ना रहे. सो थैंक यू वेरी मच ऑल द लिसनर्स ऑफ द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.